आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ। तो टॉपिक का हमारा नाम था प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। रिमेंबर कि हम आइडियल गैस ले रहे हैं, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज स्टिल एप्लीकेबल हियर। ठीक है। I'll go retrospectively, मतलब उल्टा। I'll tell you कि what is the main formula और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। Example, when we calculate pressure overall here, pressure value is equal to 1 by 3 rho v RMS square. This is the ultimate formula what we use for the calculation part, है ना? Now you can calculate this in the different form. Example, if uh, 1 by 3 rho is density, and you know density is equal to mass by volume, v RMS square. This could be the second formula. Correct. So these are the two forms of pressure we are calculating here. So now we have to understand how to calculate this density. And for density, you need mass by volume. How to calculate these two? And second question arise is कि how to calculate VRMS. ठीक है? Because we know VRMS is root mean square. First you do square of the velocity, then you take mean divide by n number of particle and then take root. This is VRMS. We need to understand these two concepts, then we can calculate pressure. Any doubt? How to calculate this? First thing, we always calculate pressure of gas in cube. Cube matlab 3D container. Container is always 3D. So in 3D container, we try to understand how gas are behaving and how this gas put pressure on the container wall. ਕੋਈ doubt? Any doubt? We have to understand. We have lot of ideal gas in it. एक हमारे पास क्यूब है, क्यूब में आइडियल गैस है। आइडियल गैस का हम एक गैस मॉलिक्यूल लेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि ये वॉल के ऊपर कैसे प्रेशर लगा रहा है ना? हम आइडियल गैस लेंगे और आइडियल गैस में वी विल कंसीडर one molecule and how this molecule exert pressure on the wall. You can take any wall. Example, if I take this wall A, B, C, D. This is the wall. Okay. And this is the region key. And this is the portion of the wall. We have one gas particle. This is one gas molecule. Okay. This gas molecule is moving toward the ABCD phase, because how many phases are there in a cube? Sania, how many number of phases we have in a 6 cube? spaces. 6 phases. Yes sir. This will be really helpful when we'll do question कि देखो कैसे ये यूज हो रहा है। और दूसरा, how many axes do we have प्रतिज्ञा? जब हम एक क्यूब लेते हैं तो नंबर ऑफ एक्सिस कितने होंगे? 2. 3, 3, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जी, right? X, Y, Z because it is cube. If you take rectangle, then it is 2. Okay. So this is gas particle, and this gas particle is moving toward ABCD. Got it? Here we have lot of gas particles. So n molecule of gas we have, not one or two.
there are billions of molecules because we take gas in the like moles. So एक mole में you have how many molecule Barinder in one mole of gas, how many molecule will be there? Billion? How much? Exact number. पता नहीं Sania. Okay, no issue. Sania. 0.023 into 10 to the power 22. 23. One Yes. mole has 6.023 into 10 raised to the power 23. For all the calculation in chemistry and physics, use only 6 into 10 raised to the power 23. That is more than enough. Okay, sir. Okay. Uh, So we have a lot of molecule of gas because we can't take one or two molecule, and they will be moving with different velocity. Some are moving V1, V2, V3, and goes on. There will be one velocity, right? Imagine there is a random motion. What is the spelling of random? RANDOM. If you have random motion, can we say this gas particle will have motion in x-axis, y-axis, as well as z-axis? Any doubt? No, sir. There will be motion in all the direction, x-axis, y-axis, and z-axis. And because if you are considering only one molecule, अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल तुम मान रहे हो तो उस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, राइट? तो दैट्स व्हाई vx will be equal to vy equal to vz. All the velocity will be same because you are considering one particle. तुम सिर्फ एक पार्टिकल को मान रहे हो तो उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी. दूसरे पार्टिकल के अलग हो सकते हैं, उसको हम नहीं बता पाएंगे. We can't tell other particle, but one particle will have same velocity. This is for one. Pratigya, if we have to calculate average velocity vector total magnitude of one particle, तो कैसे निकालें? टोटल क्या ऐसे डिस्टेंस पे निकालते हैं? टोटल टाइम. हाँ, क्या मैग्नीट्यूड ऐसे हाँ निकाल? रोटेबल होगा. हाँ हाँ. हाँ, because vector quantity are added in vector addition form. Scalar quantity simple addition form. Any doubt? हाँ जी. नो सर. Now this particle is moving. Let's take this velocity is vx. Okay, it is moving with vx velocity, and because it is in minus x-axis, so it will be. Let's take this is negative. So opposite side क्या होगी? Positive. Correct. So if this particle, gas particle is moving toward A, B, C, D, why I am considering this? Because as it is moving, जैसे ये मूव करेगा इस फेस A, B, C, D की तरफ, वो वॉल के ऊपर टकराएगा और फिर से वापस आ जाएगा और वो प्रेशर लगाएगा गैस पार्टिकल. वही हमें कैलकुलेट करना. मेक सेंस? कि ये गैस पार्टिकल जैसे मूव किया A, B, C, D की तरफ, तो वो वॉल के ऊपर जैसे स्ट्राइक करेगा तो वहां पे प्रेशर लगेगा वॉल के ऊपर और फिर वापस आ जाएगा. Okay, this gas particle will hit the wall, put some pressure, and come back. कोई doubt? No, sir. कोई doubt? हाँ. So in this case, when you know Vx, Vy, and Vz are same, can we say this average velocity will be Vx square plus Vx square plus Vx square because all the three velocity are same. So can we say it will be root 3 Vx? इट्स योर चॉइस. तुम vx लेना चाहते हो या vy लेना चाहते हो या vz, सब सेम है. क्योंकि आई एम कंसिडरिंग कि ये गैस का पार्टिकल vx डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए मैंने vx लिया. यू कैन टेक एनीथिंग y z, इट्स योर चॉइस. यहाँ तो कोई डाउट? एनी डाउट लिखा? नो. हाँ.
Now we understood that this is the velocity of particle, one gas particle moving toward the wall ABCD. है ना? Next, when it hit the wall and come back, there will be change in the momentum of particle. Correct? There will be change of momentum of this molecule because it will collide on the wall. और change कितना होगा? Example, if it is moving toward minus x, it will hit and will come back as v m vx. अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ. This is the wall. Okay, if you have this wall and this gas particle is moving with velocity minus vx, ठीक है, ये पार्टिकल हिट करेगा वॉल को यहाँ पे और हिट करने के बाद वापिस आ जाएगा सेम वेलोसिटी के साथ, बट यहाँ पे डायरेक्शन होगी प्लस vx क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है. राइट? If right hand side is negative, then left hand side will be positive. And you have to calculate change in momentum. How to calculate change in the momentum? Final minus initial. है ना? Final minus initial. If you take final velocity as vx positive minus sign, what is v1 value? Minus mvx. तो change in momentum क्या होगी? 2mvx. This is how you calculate in Newton law of motion. चेंज इन मोमेंटम जब भी निकालोगे वो डबल हो जाएगा अगर वेलोसिटी सेम है और एकदम राइट एंगल पे वापस आ रही है तो. बताओ इसमें कोई डाउट? No, sir. ठीक है. अगर मैं इसको उल्टा कर लूं, अगर इसको पॉजिटिव मान लूं और दूसरे वाले को नेगेटिव मान लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इट डिपेंड की व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या दिया है वो तुम्हें बताएगा कि कौन सा कंसिडर करना है, तो उसमें डाउट नहीं होता. इफ राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव तो इसको कैसे लिखोगे? फाइनल है माइनस दिस, इनिशियल है दिस, तो फॉर्म ये आएगा जो मैंने अभी इसमें मार्क किया. तो इसमें कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती और क्वेश्चन गलत नहीं होता जब तुम चेंज इन मोमेंटम निकालते हो तो. और यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आ जाती है -2mvx. अगर ये प्लस भी आ जाती तब भी ठीक था, तब भी कोई मिस्टेक नहीं थी. वो बस कैलकुलेशन के लिए इजी रहेगी तो मैंने लिया है. इवन इफ यू टेक पॉजिटिव वैल्यू स्टिल इट इज. बताओ किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. अब ये मॉलिक्यूल की मोमेंटम चेंज हुई, यू नो. जैसे वरिंदर, व्हाट इज द न्यूटन थर्ड लॉ? Every action equal and opposite action. Exactly. Every action is equal to opposite reaction, equal and opposite reaction. If one is exerting force at two, then two will also exert force on one with the same amount but opposite direction. Right? अगर ये मॉलिक्यूल वॉल के ऊपर चेंज इन लीनियर मोमेंटम लगा रहा है -2 mvx, if change in momentum by the molecule is -2 mvx, so what will be the change in momentum for the wall? Equal and opposite, it will be plus. Any doubt? Momentum transfer to wall, equal and opposite. So हमारी वैल्यू थी -2 mvx, ये हो जाएगी +2 mvx. Equal and opposite. Any doubt? Yes or no? अगर मॉलिक्यूल जब
वॉल पे टकरा रहा है और उसकी वैल्यू है -2 MVx, तो वो वॉल भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी बट अपोजिट डायरेक्शन में। इफ इट इज माइनस तो वो प्लस हो जाएगा, अगर हमारी वैल्यू प्लस होती तो वो माइनस हो जाता। एनी डाउट गाइस? नहीं सर। नो सर। सानिया, नो सर। बरिंदर? नो सर। ठीक। अब सर तो मान लो फिर जिस, जो -2 MVx है सर, वो किसका हाँ फोर्स है? वॉल का है या हमारी तरफ से है? सी -2 MVx फॉर गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। और वो इसलिए है क्योंकि हमने जब राइट साइड में जा रहा है तो उसको हमने प्लस कंसिडर किया है, और जब वॉल के लग के आएगा तो माइनस कंसिडर किया है। साइन चेंज करने से वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन कभी भी इसके क्वेश्चन गलत नहीं होते एग्जाम, ठीक है। यस सर। अब ये क्या है, जो माइनस की वैल्यू है वो है मॉलिक्यूल का, जब मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हुआ। अब जो मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हुआ वही चेंज वॉल में भी तो हुआ होगा। अब न्यूटन थर्ड लॉ के एप्लीकेशन में न्यूमेरिकल भी इसी टाइप के आते हैं। यू गेट न्यूमेरिकल फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ इन द सेम वे कि देखो, रॉकेट ऊपर मूव कर रहा है, जितना गैस नीचे मूव करेंगी रॉकेट भी उतना ही प्रोपेल करेगा ऊपर। मेक सेंस? या गन वाला कि गन जब हम फायर करेंगे तो रिकॉइलिंग होगी वहां पे, तो जितना हम फोर्स लगा रहे हैं गन के ऊपर उतना ही गन हमारे ऊपर फोर्स लगाएगी। जितना गन बुलेट के ऊपर फोर्स लगा रही है तो रिवर्स भी उतना ही होगा, राइट। यही काम आते हैं ना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या हम बोल सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के एप्लीकेशन ही है ये। याद आया? यस। इसलिए तुम एक चीज नोटिस करोगे, ऑल ऑफ यू, जब तुम वन शॉट देखते हो ना, तुम्हें लगता है कि अच्छा मैं वन शॉट देख के चली जाऊं और मेरा काम हो जाएगा। कितने लोगों ने ऐसा किया है जब भी कोई टेस्ट हुआ है? पता क्या? सर एक बार किया था। नहीं तो फिर हमने। रिजल्ट निकला? सर मैक्स टू मैक्स 3 से 4 क्वेश्चन बने होंगे। हाँ, ओके। क्या ज्यादा वो तो नहीं बना, और वो लॉन्ग ज्यादा नहीं? टर्म के लिए याद भी नहीं रहा वो सारा कंटेंट। हाँ, पता क्या? नहीं, मेरे पास फोन ही नहीं था तो कहाँ देखूंगी। बहुत बढ़िया, हॉस्टल। बेस्ट। बरिंदर? देखा है सर, +2 में देखा था। काम आया था जब एग्जाम हो रहे थे नीट में? नीट में नहीं आया बट बोर्ड के एग्जाम में आया था। हाँ, बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि वो डिट्टो कॉपी आ जाता है, उसमें चेंज ही नहीं आता कुछ भी। हम्म। तो पता क्यों नहीं आता? क्योंकि जब तुम सिर्फ फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करते हो ना, यू जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर फॉर्मूला, कि ठीक है मुझे ये बता दो सर कि फाइनल फॉर्मूला जब हम प्रेशर ऑन द आइडियल गैस निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इसके क्वेश्चन में कर दूंगी। बट जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे हम कितनी सारी चीजें रिवाइज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्यूब में कितने फेस हैं, कितने एक्सिस हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे काम करते हैं, वन मोल का क्या रिलेशन है, एक्सिस कैसे काम करती है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, क्या बोलते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये। जब हमने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। लीनियर मोमेंटम देख रहे हैं हम कि वो कैसे काम करता है, न्यूटन थर्ड लॉ देख रहे हैं। इतनी सारी चीजें एक ही टॉपिक में हो रही है तो तभी तो चीजें समझ में आती हैं। इसलिए तुम देखोगे जिस इंसान को फिजिक्स आती है उसको या तो पूरी आती है या बिल्कुल नहीं आती। बीच का काम नहीं होता कि मुझे आधा पोर्शन आता है आधा नहीं आता। तुम नोटिस करोगे केमिस्ट्री में तुम कर सकते हो कि मैंने ऑर्गेनिक कर ली है, मेरी हो गई है, इनऑर्गेनिक मुझे बिल्कुल नहीं आती। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, या तो तुम्हें चैप्टर आता है या नहीं आता। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीजें लिंक्ड हैं कि तुम उसको सेपरेटली पढ़ ही नहीं सकते कभी ना। एवरीथिंग इज सो कोरिलेटेड। इफ यू ट्राई टू रीड वन टॉपिक यू कांट,
और यही प्रॉब्लम है कि नीट के बच्चों के फिजिक्स में मार्क्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा मेरी 11th खराब हो गई, मेरा ये चैप्टर खराब हो गया, मैं दूसरा स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ तो वो तो हो ही जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि हर बार उस चीज का खत्म। एप्लीकेशन आएगा ही है। इसको क्या अनिता, समझ में आया तीनों को? इसलिए चाहे तुम कम पोर्शन करो, लेकिन हाँ सर। एक चैप्टर उस टॉपिक के जो डेरिवेशन है उसको करके जाओ। डेरिवेशन तुम्हें बहुत सारी चीजों के साथ लिंक करती है। ऐसा लगता है पूरी फिजिक्स हम एक साथ में कोरिलेट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी अभी मैं करने वाला हूँ, और भी ज्यादा। तो न्यूटन थर्ड लॉ हमें यहाँ पे एप्लीकेशन किया, ठीक है। मोमेंटम को ट्रांसफर किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है? अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो ये बोलता है, अब हमें क्या समझ में आता जब न्यूटन के लॉ पढ़ोगे तीन, तो तुमने फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देन देर इज नो चेंज। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। इफ देर इज एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, है ना। सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, ये बोलते इफ यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से स्पीड में चेंज आएगा। लॉजिकल है कि मान लो एक कार है, वो स्टार्ट नहीं हो रही, जितना तुम फोर्स लगाते जाओगे उसके ऊपर, वो उतनी ही ज्यादा स्पीड के साथ चलेगी। पीछे से धक्का मार रहे हैं, यू आर पुशिंग द कार फ्रॉम बैकवर्ड साइड, तो जितना फोर्स अप्लाई करते जाओगे उतना ही स्पीड बढ़ती जाएगी। अब अगर अब अगर कोई, ठीक, तो मेक सेंस। अब इसलिए तुम खुद देखो, यहाँ पे जब तुम ये फॉर्मूला निकालते हो कि फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ? मास तो सेम ही था कार का, कार की स्पीड चेंज हो गई, डीवी बाई डी टी, एंड दिस डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। या तुम बोल सकते हो कि मोमेंटम चेंज हो गई, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर either change in the mass or change in momentum. Yes or no? This is Newton's second law. मास भी तो चेंज हो सकता है, कि एक ट्रक है, सेम स्पीड से चल रहा है, बट उसमें से क्या बोलते हैं, जो सैंड हमने फिल किया वो लीक होती जा रही है। यू हैव अ ट्रक, सैंड इज लीकिंग आउट, तो मास रिड्यूस होता जाएगा ना, मास चेंज होगा। तो वो भी पॉसिबिलिटी है। यू मस्ट हैव सीन दिस क्वेश्चन। या रॉकेट में तुम गैस छोड़ते जा रहे हो तो मास कम होता जा रहा है ना, राइट? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये बोलता है कि हमें पता है, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपी बाई डी टी। मैं डीपी बाई डी टी लिख देता हूँ हर जगह, वरना कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो वी आर सेइंग कि फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, है ना। इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, if force is zero, then there will be no change in the linear momentum. It means dp will be zero. It means linear momentum of the first situation will be equal to the linear momentum second situation, क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा। यही था ना। अब सोचो अगर हमें ये चीज समझ में नहीं आती, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को समझ जाओगे, दैट इज इम्पॉसिबल। फॉर्मूले याद कर सकते हो, लेकिन ये तभी समझ में आता है जब वो काम करता है। यस और नो? हाँ सर।
Yes, sir. Applying this, we got to know कि देखो, there is a wall. This is ABCD. This kind of wall we have ABCD. एक गैस पार्टिकल मूव कर रहा है इसकी तरफ, ये गैस पार्टिकल है। अगर यहां से इसका डिस्टेंस जो है वॉल से वो है L, ये गैस पार्टिकल वॉल को हिट करेगा और वापस आ जाएगा। ठीक है, अगर ये इस तरफ हिट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी थी vx, तो वापस आएगा तो माइनस vx। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम हमारी आ गई थी कितना, आ गई dp। हाँ, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना आ गई थी, -2 mvx आ गई थी। एंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ वॉल equal and opposite reaction, 2mvx. Any doubt? Right? No, sir. If this is the situation and you have to calculate कि what is the velocity, this vx, can we say velocity or speed is equal to distance by time? Speed is equal, vx speed is equal to distance by time. करेक्ट। तो जब ये ट्रैवल कर रहे थे तो इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया, L जाते हुए L आते हुए 12 डिस्टेंस। ठीक है, टाइम कितना लगा, वी डोंट नो, मान लो इसको डेल्टा टी मान लो। तो कितना टाइम लगा कोलिजन के बीच में, 12/vx। एनी डाउट गाइस? No, sir. राइट। तो वी नो स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज 12, टाइम वी डोंट नो, सो टाइम वैल्यू विल बी डिस्टेंस बाय वेलोसिटी और डिस्टेंस बाय स्पीड। राइट, डिस्टेंस बाय स्पीड। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं अनविता? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला? सर याद नहीं आया। 1/t, E. 1 by टाइम पीरियड, है ना। And this dt is the gap between the two collision। एक बार collision हुआ, उसमें vx velocity थी and distance covered was 12। उसके बाद next collision होगा तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, that is dt। this dt is the time between the two collision, two successive collision। तो अगर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो होता है 1/t, 1/टाइम। तो यहाँ पे अगर हमें देखना है कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो dt का उल्टा होगा। नंबर ऑफ कोलिजन कितने होंगे पर सेकंड पर मॉलिक्यूल, तो वो फ्रीक्वेंसी जैसे ही है। नंबर ऑफ कोलिजन, कितने कोलिजन हुए एक सेकंड में पर यूनिट टाइम, पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मान रहे हैं, एक मॉलिक्यूल के कितने कोलिजन हुए, तो वो क्या फ्रीक्वेंसी जैसा नहीं है, और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम, 1/dt। और ये क्या vx/12 नहीं हो जाएगा? बताओ, कोई डाउट? यस और नो? Frequency is inverse of time and number of collision per second is same as frequency, तो vx/2 है। अब ये vx क्या है, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, आरएमएस। एंड ये 2l क्या है, मीन फ्री पाथ। दैट्स व्हाई you can also say कि when I am calculating number of collision per second per molecule, which is equal to vx/2l, this vs is almost like molecule की average velocity, molecule velocity। And what is this 2l? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का सिंपल सा मतलब होता है दो कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, दो कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मान लो हमारे पास ये
space. We have this space. This gas molecule strikes here. ठीक है, then it strike there. तो यहाँ पे मीन फ्री पाथ क्या होगा? ए टू बी के बीच में जो डिस्टेंस है वही है. दो सक्सेसिव कोलिजन में कितना डिस्टेंस होता है? दैट इज मीन फ्री पाथ. एनी डाउट? 12 इज व्हाट? कि दूसरा कोलिजन होने से पहले का डिस्टेंस, राइट? एनी डाउट? सो इफ यू सर सी थोड़ा कि एक दिस और इज, बार समझा देंगे? बिल्कुल, दिस कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो हम क्या बोलेंगे, जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होती है वो होती है आरएमएस, और जो मीन फ्री पाथ होती है उसको लैम्डा आरएमएस बोलते हैं, मीन फ्री पाथ. ठीक है, इसको एम ही लिख देता हूँ क्योंकि मोस्टली एनसीईआरटी बुक एम लिखती है. अब इसको दोबारा से, कहाँ से समझ में नहीं आया सर? मतलब कहाँ पे रिवीजन की जरूरत? सानिया? नहीं सर, यही पार्ट थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, मीन प्री पाथ वाला। हाँ, तो वी गो टू नो कि देखो कितने कोलिजन एक सेकंड में होते हैं, वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, वो टाइम का इनवर्स है. तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी बाय डिस्टेंस. तो जो ये वेलोसिटी है ना, ये मॉलिक्यूल की आरएमएस वेलोसिटी होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. और मीन फ्री पाथ क्या होता है? दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस. कि इट मींस कि पहले मॉलिक्यूल ए के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक किया, फिर दोबारा से स्ट्राइक किया बी पॉइंट के ऊपर. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? दैट इज मीन फ्री पाथ, दैट इज ए टू बी. व्हाट इज मीन फ्री पाथ वैल्यू? ए टू बी का जो डिस्टेंस है, ये दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस. कोई डाउट? Mean free path is the distance between two successive collisions. Got it? यस सर। हाँ, distance between two successive collisions. Two successive collisions. बताओ, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब एक और बात बताता हूँ कि नीट के बच्चे पता है क्या मिस्टेक करते हैं? इस पूरे डेरिवेशन को याद करने की कोशिश करेंगे, नहीं करना. ये तो बस रिवीजन के लिए था कि तुम्हें लॉजिक समझ में आए और तुम्हारा दूसरे टॉपिक का रिवीजन हो. यही करते हो ना तुम, कि जो तुम्हें दे दिया गया है उसी को बार बार रिवाइज करते रहोगे पूरे टॉपिक को. अरे नहीं करना, ये तो बस समझाने के लिए था कि वो जो तुम लॉज ऑफ मोशन में पढ़े हो, जो तुम काइनेमेटिक में पढ़े हो, जो तुम वर्क एनर्जी पावर में पढ़े हो, वो रिवाइज, ना कि ये कि दोबारा से पूरे चीजें कर ले. आगे बढ़ते हैं. जैसे यहाँ पे अब हमें निकालना है फोर्स. क्यों? मुझे निकालना है प्रेशर, और तुम्हें पता है प्रेशर इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, है ना? अब मुझे फोर्स की वैल्यू चाहिए कि फोर्स कितना होगा. हाउ टू कैलकुलेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ? डीपी बाई dt, है ना? डीपी बाई dt. जब तुम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हो तो उसकी स्पीड चेंज होती है या मास चेंज होता है, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ. फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई dt. या हम बोल सकते हैं डीपी और dt किसके बराबर है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बराबर है, 1/dt. मेक सेंस? 1/dt किसके बराबर है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी के. अब मुझे बताओ डीपी की वैल्यू क्या आई थी वरिंदर? चेंज इन लीनियर मोमेंटम की वैल्यू क्या आई? 2 mvx और कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आई थी? बताओ हाँ या ना. mv vx/12. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हाँ जी। फोर्स इज इक्वल टू टू के साथ टू कैंसिल हो जाएगा, एम वी एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एल. यस और नो?
है ना। हाँ सर। अब दोबारा से इस टॉपिक पे आओ। जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था और तुम वेक्टर पढ़ चुके हो, तो वेक्टर प्रतिज्ञा क्या सर? कुछ बोलना चाहती थी। नहीं सर, आप कुछ बोले। क्या पूछ रहे मुझे? जब हम कोई भी आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ। यस ठीक है। सर। तो तो जब हमने नॉर्मल कोई भी वेलोसिटी निकाली थी, उसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो वो क्या होता है? वीएक्स का स्क्वायर प्लस वीवाई का स्क्वायर प्लस वीजेड का स्क्वायर अंडर रूट। यही तो वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, हम्म, है ना। तो यहाँ पे जब हम वीएक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो एवरेज वेलोसिटी है उसका अंडर रूट 3 होगा? हाँ या ना? हाँ। क्योंकि अंडर रूट को मैं लेके चला गया। तो यही वैल्यू तो मैं अभी यहाँ पे पुट करने वाला हूँ कि जो वीएक्स की वैल्यू है, वो एवरेज जो वेलोसिटी है उसका अंडर रूट 3 है, जो ओवरऑल का मैग्नीट्यूड है। यस और नो? हाँ तो सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? हाफ इंस्टेड ऑफ वी एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 3 एंड यस और नो? यस सर। करेक्ट। तो ये हमारा आ गया फोर्स। लेकिन हमें तो निकालना था प्रेशर। तो प्रेशर को कैसे निकालें? प्रेशर बाय द गैस। डिवाइड। गैस कितना प्रेशर लगा रही है? तो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर 3L और डिवाइड में एरिया। क्या बोलते हैं, प्रतिज्ञा, क्या जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वी, क्या ये वॉल्यूम वी एरिया इंटू लेंथ होता है? तो हाँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? टी वी, कैपिटल वी। कैपिटल वी इज वॉल्यूम, रिमेंबर दिस। एनी डाउट? नो सर। यहाँ पे अब तक जो हम प्रेशर लगा रहे हैं, ये प्रेशर है बाई दी वन गैस मॉलिक्यूल, बाई वन सर गैस यहाँ पे मॉलिक्यूल। आपने mv² / 3la लिखा था, फिर उसके बाद हाँ, mv²/2v कैसे हुआ? गुड पॉइंट। ये 3 ही होगा, बाई मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ऐसे ही पूछते रहो लॉजिकली, जैसे ऐसे करते जाओगे तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब क्वेश्चन पूछते जाओगे कि हाँ, लिखते हुए मिस्टेक हो सकती है। यहाँ तक कोई डाउट? अब नो सर। ये नो है सर। एक गैस मॉलिक्यूल का, लेकिन मैंने बोला था कि देयर वी हैव बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल, लाइक इनटू 6 × 10⁻23 की फॉर्म में बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो टोटल गैस का प्रेशर कितना होगा? प्रेशर बाई ऑल गैस मॉलिक्यूल। क्या हम इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारा टोटल प्रेशर निकल जाएगा? क्या हम सबमिशन कर देंगे
1/3 mv square by volume. Good out. No, sir. अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से और डिवाइड भी कर दूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, जस्ट गिव मी अ मिनट. हेलो चिन्मय, गुड इवनिंग. Yeah. No, like he can't. He told me. That's why, like now onward, if like I'm taking your class, so it will be according to your syllabus. And but we'll record the session if feel ki it will be helpful for him, so he can watch video. Okay. So today onward, whatever portion you have, your level, whether it is CT, board, or JE, whatever you will say, according to that we'll do. Okay. So what do you want to do today? We'll solve question. So do one thing. You send me a quick summary of the full chapter, so it will be easy for us to solve question in class. Yeah. You study, finish summary, and send me. Okay. Hello, guys. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So Chandana, can you hear me? Chandana, can you hear me? Hello, sir. Yeah. Yes, sir. Good evening, sir. Okay. So the good evening. So the point is, I got text from Vandana. You have some work. So I tried to make sure ki most of this lecture was in English and Hindi both, so you can understand this. Okay. After finishing this class, I'll share your video. You can go through it and send me notes. Okay, sir. Okay. So if you can understand this current portion is fine. If you can't, don't worry. I have recorded this session and I'll share this session within like by today night. Okay, sir. Okay. Yeah. So guys, we did this key pressure is equal to addition of all the molecules. Above pressure for one molecule. Lower when you have summation, this lateral M summation, so means for all the molecules, right? And then I multiplied and divide by N. It doesn't make any difference. What is N? Number of molecules. Okay. What is N? N is the number of molecule, total number of molecule of gas. So if you understood this part, then can you write like this? Pressure is equal to 1/3 common M N divided by V volume and summation of velocity square by N. Correct? Tell me, Barinder, he want it will be equal to VRMS square summation of normal velocity divided by the number of molecule. Want it to be equal to the VRMS? Any doubt? Because VRMS means square mean under root. We took under root to the other side. Yes or no? Because actually
VRMS value is equal to summation of all the velocities, square, average, and then under root. Under root will go to other side. That's yes or no. Yes, sir. And also, if you take mass of gas, capital M, will it be equal to small m and n number of molecule? Example, if one ball mass is 1 kg, what is the mass of 100 ball? 100 kg. Same here. Small m is the mass of one gas molecule. Okay. And n is the number of molecule. If you multiply both of them, what will you get? Total mass of gas. Make sense? And now you tell me in the very beginning of this class, didn't I tell you the same thing here? Capital M is the mass of total gas. Small m is the mass of one gas molecule. And if you want to calculate mass of the gas, mass of one gas molecule multiplied by the no total number of molecules, right? Same thing like you have 100 ball. One ball mass is 1 kg. You fill this 100 ball in a bag. So batao, what is the total mass of the bag? Total number of ball and mass of one ball, isn't it? Same thing. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. If this is the situation, tell me guys. Pressure is equal to 1 by 3. Small m multiplied by n is equal to capital M. This is volume and this is VRMS square, correct? And Chandana, what is mass by volume? Density. That is the ultimate formula. Pressure is equal to 1 by 3 rho V RMS square, where this rho is the density of gas. Tell me, we got the same formula what we wrote in the beginning, in the starting of this topic. I told you, memorizing the formula is easy, but at the same time, you will forget very soon, right? But how to find it? It will give you lot of shadow on other topic as well. है ना? If we are touching every topic, how we are calculating it. Now tell me everybody, starting from Barinder. Barinder, क्या derivation करना बहुत जरूरी है? Is it really important to do derivation? Yes, sir. समझ में आया सब कुछ? Yes. प्रतिज्ञा, हाँ सर. अच्छे से समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं? नहीं. सानिया, No doubt, sir. क्या हमें पहले ऐसा लगता था कि like you used to feel all of you कि sir why we are doing derivation, why can't we directly solve questions? Because even in question you have to use multiple topic from different sector. अन्विता, हाँ सर. कुछ पार्ट्स
कुछ पार्ट समझ में आया जितना देखा? हाँ सर। Yes. हाँ. Chandana, I can't ask you because you were the last person to attend this session. So that is the ultimate thing. See, you can remember formula, but just writing it multiple times. Ki pressure is equal to force by area, and this pressure is also equal to 1 by 3 rho density vRMS square, right? Or 1 by 3 density is equal to mass by volume vRMS square. अब हम इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं. We can write in different form like 1 by 3 rho. We can also write vRMS square as summation of V square divided by number of molecule and many more. Correct? Yes or no? It's your choice. But now you can do it because you know all correlation, how to correlate the thing. Example, using these two part, this pressure and this part. Tell me if you take volume to the other side from the third part. Can you say PV is equal to 1 by 3 m v RMS square, right? Yes or no? Everybody. Yes, sir. Can we also say it is equal to nRT? Yes, sir. Exactly, right? अब डिपेंड करता है कि वो हमसे क्या पूछ रहे हैं. डिपेंड कि व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग, बट यू कैन कोरिलेट एवरीथिंग बिकॉज you know how to derive the thing. Chandana and Anvita knows that even in the end of the portion, when we were doing final question of the paper, I used to do derivation for everything. Correct, Anvita, Chandana? Yes sir. I was not able to remember all the formula, but I could Yes. derive it within like 20-30 seconds, not even more than that. ठीक है? That's why even if you ask me after few months, I might forget some formula, but I can show you how to derive it and I'll finish it maximum 30 seconds. So you feel ki sir, derivation is very long. Derivation is not long. If you solve more number of question on concept, you can make it really fast. Because you feel ki most probably they will give only this formula, pressure is equal to 1 by 3 rho V RMS square. Though it is most popular formula, no doubt about that, but it's not always true. They can ask ki you know mass, volume, VRMS, and they are asking you to calculate temperature, and then you will think कि ये तो हमने किया ही नहीं था. We have never done that, so I don't know how to calculate temperature. I can calculate pressure. Yes or no? That's why it is important to correlate maximum number of things. Maximum number of things. Okay. That's why derivation take time, but derivation make you understand how to do that. Okay, so this is applicable for everything. Example, if you take now Sania, Barinder and Pratigya, I asked you ki what is the number of face in each cube and you said sir 6. Now if you have to calculate what is the average number of molecule for each wall, average number of molecule for each wall, how to calculate this? For each wall. How to calculate this? You know total number of molecule present in one room, one cube is n.
And we have total 6 wall in a room. 4 side wall, 1 roof, 1 floor. है ना? 4 साइड की वॉल है, छत है एंड फ्लोर है. Total 6. What is the number of molecule present for each wall? Total number of molecule divided by 6. Makes sense? This is logical, right? If somebody asks you what will be the number of molecule present along each axis, Anvita, how many axes do we have in cube? 3. 3 axis, x, y, z, x, y, z. So total number of molecule in each axis n by 3. Makes sense? They can ask anything. You can solve anything. Yes or no? Yes, sir. Yeah. So you are not supposed to remember all the formula what I have explained in the derivation. जो मैंने डेरिवेशन में बातें बताई है सारे फॉर्मूला याद नहीं रखने. फॉर्मूला तो कोई भी याद नहीं रखना. But you have to understand कि how we got. तो automatically you will be able to remember. अब मुझे खुद बताओ कितने लोगों को ये याद करना पड़ता है PV is equal to nRT. How many of you have to remember this formula PV is equal to nRT? No one ना. सबको याद आ जाता है. All of you can recall easily, right? क्यों? Because you are doing it multiple times. As simple as that. Right? Any doubt? No, Let sir. me do some other part. So then we'll be able to solve maximum number of questions. Tomorrow I'll finish this chapter at any cost. Okay. Okay, sir. We talk about the translation kinetic energy. Translation kinetic energy means kinetic energy in the straight path. Correct? What is the normal formula of kinetic energy, Barinder? half mv square. Half mv square. This will be the kinetic energy of one gas molecule, right? Right. If you take n number of molecule, n number of molecule, so how to calculate this? Kinetic energy of total gas will be half capital M V square. Yes or no? Yes, sir. Divide by here, like this will be the total velocity. Easy. Above kinetic energy for one molecule and lower kinetic energy for the total number of molecules. Correct? How to correlate these two? You can multiply and divide by n. You will get the idea. Okay. So if you calculate total kinetic energy in the translation motion, so it will be 1 by 2 total mass m, and here you will have VRMS square. You can ask her how you got this, because our initial kinetic energy was half small m v square, correct? If you multiply and divide by n, capital M is equal to m into n, and VRMS here is equal to v square by n. Yes or no? Right. Yes, sir. Now you tell me based on this topic, uh, pressure is equal to 1 by 3 rho v square. Can I say this v
RMS square will be equal to 3 capital P by rho. Yes or no? Yes. So this is what, like, people try to remember all the formula. You can't. So remember minimum formula and then like convert one form into another form. So this VRMS square is equal to 3 P by rho. So what will be the translation energy? 1 by 2 capital M. And instead of VRMS square, can you write 3 P by rho? Right? Yes, sir. So this is equal to, can you write this density 3 by 2 M P? Can you write this density as mass by volume? Correct? Mass cancel. Can we also say this translation energy will be equal to 3 by 2 PV? Correct? Yes. See, again and again I'm mentioning कि what you are trying to memorize. कि तुम क्या याद करने की कोशिश करते हो कि मैं फॉर्मूला याद कर लूं. But if you know कि kinetic energy is equal to half mv square and I can correlate this with pressure because I already calculated, right? I know kinetic energy is equal to half mv square and I know pressure. I just calculated rho mv RMS square. Can't you correlate these two? Do you need formula like new formula to memorize this? And if you calculate here energy density, you know you have this energy density 3-4 times in class 12th. है ना? One capacitor chapter, solenoid in the electromagnetic induction, right? Or magnetic field. Almost every chapter in 12th class, you have this energy density. So what is energy density? Energy per unit volume. Energy per unit volume. This is energy density, correct? And this we symbolize by V. V means volume. Energy related with the volume energy density. Can I say this EV will be equal to mm, EV is equal to energy by volume. Energy is 3 by 2 PV by volume. Volume cancel. It will be equal to 3 by 2 P. Correct? So this is the energy density. Now, sometimes they can ask in a different form. Key, you know, ideal gas PV is equal to nRT. N is the number of moles. So it is given mass by molar mass. MW means molar mass RT. Correct. So if we go to another side, so can you say pressure will be equal to M by V, MW, RT, and M by B, you know, rho, rho RT by MW. You can also say P by rho is equal to RT by MW. MW is equal to molecular weight. Yes or no? Yes. Now correlate with this. Your where is this?
this V square was equal to 3p by rho. Can you say this will be also equal to V RMS square is equal to 3p? P by rho is equal to RT by MW, isn't it? Yes, sir. Correct. See, you can correlate in this form. And what is the Boltzmann constant, Chandana? So like value? Yes, formula, you can say. Is this the Boltzmann constant formula? Yes, sir. And if you write like this, uh, so can you say R by the number of molecule? Can you write like this? K B T by the mass, right? Ask me your doubts. All of you अपना डाउट पूछो अगर डाउट है तो. And that is the reason you know कि VRMS is equal to under root 3p by rho. P by rho is also equal to RT by MW molecular weight, or P by rho also equal to KBT by the mass. This is the most popular thing you get from this topic. You can ask, sir, what is this small m? Small m is mass of one molecule. We did in the very beginning. One gas molecule. Not all, only one gas. Right? Why? Because this molecular weight is equal to mass of one gas molecule multiplied by number of molecule. Right? Right? So you can write it like this. R is same. Instead of MW, you are writing M and A. And you know KB is equal to R by NA, also equal to KBT by M. How many of you thinking, sir, this is too much? कितने लोगों को लग रहा है कि सर ये तो एकदम दिमाग खराब ही कर दिया आपने, इतना सारी चीजें पढ़ा दी कि समझ में नहीं आ रहा शुरू कहाँ से हुआ खत्म कहाँ से हुआ है. सर वो जो RT बाय M इंटू NA, सर वो इज इक्वल टू स्मॉल m कैसे हुआ? Because total mass is equal to one gas mass multiplied by the number of molecule. Now total mass is equal to one gas molecule mass multiplied by the number of molecule. Same like capital M is equal to small m into n. Same thing. This is the reason I tell you, never revise formula and never go through the one shot. सर उसके बाद जो आपने लिखा है KBT बाय स्मॉल m, सर वो वाला, सर वो
See, R by NA is equal to KB. This part. Oh, yes, sir. Yes, sir. Any other doubt? सर कब तक क्लास चलेगा? आज 12 बजे तक क्लास चलेगा. Today ठीक. we'll go till 12 o'clock in the night and we'll finish this kinetic theory of gas probably. Hopefully. What is the most एक common मिलेगा ना question? सर? हाँ, ब्रेक तो दे देंगे. हाँ. Thank you, sir. अब what could be the question they can ask you in the exam? Usually there is a relation. Example, if from this case, if density is constant, what is the relation with the pressure? Directly proportional. What is the relation with the density if pressure is constant? Inversely proportional. What is the relation with the temperature when molecular mass is constant? And what is the relation with uh, probably mass of one molecule? So like this. Usually, ye, these are the most popular question. Depend what is constant. Example, when you are writing this, so density is constant. When you are writing this, pressure is constant. When you are writing this, molecular weight is constant for the same gas. When you are writing this, temperature is constant. You should know what is constant. Okay? Yes or no? Yes, sir. Don't worry, you are not supposed to remember any of these formula. It's just you should know how we got it. तुम्हें बस पता होना चाहिए कि हमें कैसे मिला ये फॉर्मूला, याद नहीं करना. This is the only issue most of NEET students have in their exam because they try to memorize the formula. And that's the only reason कि वो क्यों NEET crack नहीं कर सकते, physics तो नहीं कर सकते at least, because they memorize formula. And first instance, they always try कि also मुझे formula याद हो जाए. I should memorize formula thoroughly. No, never try this. Just see formula again and again and again and solve question. While you solve question, always see formula and write it. Okay. So there are three velocity. After that, we'll solve a few questions. You have seen three velocity: vRMS, v most probable, and v average. Okay. If you calculate instead in case of vRMS, you know every value is three, right? Example, it is 3RT by MW, correct? For most probable, it will be 2, 2RT by MW. And for average, it will be 8 by pi, RT by MW. Which one is greater? Now, you have to write in all the form, by the way. Key, you have to write VRMS. VRMS in the form of under root 3 P by rho. Okay. Then 3, this is equal to RT by molecular mass, and under root 3, here you have KBT by mass of one gas molecule, right? Then second is the most probable. Most probable, everything in the form of 2. 2P by rho, 2RT by MW,
and 2 kBt by mass. Same for average, 8 by pi, 8 by pi p by rho, 8 by pi RT by MW, and 8 by pi kBt by m. Yes or no? It's just key. We wrote in three form: VRMS, V most probable, and V average. And you know, out of these three, root 3 value is maximum, then 8 by pi, and then 2. Why? Because if you calculate 8 by pi value, what is the pi value, Anvita? Yes, sir. What will be the exact answer? 8 divided by 3.14, 2.5. Okay. So it is greater than most probable and lesser than RMS. So you will see VRMS is maximum, then it will be average, and then it will be most probable. Batao, yes or no? And you know RAM, R first, average second, and most probable third. Yes, sir. Okay. This is one of the most popular thing. What we are left with, अभी हमारा क्या बचा है? Degree of freedom, equipartition of energy, specific heat, and yeah, mostly part is done. So tomorrow we'll definitely finish it. Let me show you question. And now you will feel कि question कितने easy है. Let me go through it. Kinetic theory. Um, Kinetic theory. Mm, fix. Let me check this chapter. Unit and measurement. Waves, thermodynamic. Okay. KTG question, especially from this topic. Remember, this year we'll solve a lot of question even out of this PYQ. But I want to show you PYQ क्योंकि this question 2023.
See, temperature of a gas is this. To what temperature gas should be heated? We have T1 minus 50. T2 we have to calculate. If RMS speed increase by 3 times, RMS V2 RMS will be 3 times of V1 RMS. Correct? Anamita, do you have network issue? Oh, yes, sir. Okay. So, in Just this ask question, me something. no. So, we are solving question number 14. The temperature of gas is given. Temperature we have to calculate. If RMS speed increase 3 times, you know, here you have same gas. If gas is same, so this small m value will be same. And temperature is changing. You know which formula you have to apply. V RMS is equal to 3 RT by molar mass. Yes or no? Correct. Sir. R is gas constant. Molar mass for a given gas is same. So it means V RMS directly depend upon temperature. Now you can solve this question. This is NEET question 23. 23. So what is given? T1 temperature is minus 50 degrees Celsius. It means it is equal to 223 Kelvin. T2 you have to calculate. Okay. V2 speed is 3 times of V1 and you have same gas. Same gas means uh, you will have same molecular formula. Correct. If you know all these things through this, तुम्हें समझ में आएगा. You will get to know कि VRMS formula is under root 3 RT by molar mass. R is constant, MW is constant. So V RMS directly depend upon the temperature, right? If temperature increase, then VRMS also increase. So what you have to write? V2 by V1 is equal to T2 by T1, right? Directly proportional. You take a route to the other side. Can you show? See, V2 by V1 का whole square is equal to T2 by T1. T2 by T1. Now you can put value. You have to just put value. What is the V2 value? 3 times of V1 divided by V1. This cancel. T2, T1 value 223. 3 square 9. What will be the T2 value? 9 multiplied by 223. What is the answer? सर Got it? ऑप्शंस थोड़ा चेक कर लेते हैं. Kelvin और डिग्री सेल्सियस. तो 9 3 जा 27 2 9 2 जा 18 220 and this Kelvin. In degree Celsius, you have to minus 2007 minus 273. सर 1734 आ रहा है मेरा 4 3. Is there an option? Degree Celsius, no. Kelvin, no. So we have to check if we made any mistake in this question. Let's see. सर ऑप्शन डी नहीं आएगा क्या? डी तो नहीं आएगा. 223 तो बहुत कम है बिकॉज स्पीड इंक्रीज की है. Temperature of a gas this.
what temperature gas should be heated so that RMS speed increase by 3 times. Okay, you know what does it mean? What is the new speed? New speed is increased by 3 times. It means if initial speed was v, then final speed will be more than 3 times. So total speed will be 4v. This is the key. Now you are understanding. And I told Anvita Chandna so many times that here formula is not really the big thing. The biggest point in this topic is this VRMS increased by 3 times. It is not 3 times of initial speed. That is the difference. If somebody tell you कि new RMS is 3 times of the old RMS, so it is different thing. If they say कि increase by 3 times, it means initially it was V and increase by 3 times, so it become total 4V. Understood? Now everything will be same. V2 by V1 का whole का square, T2 by T1. See, you have to simply put formula 4V by V, T2 by what is this 223. V cancel. T2 value will be 16 times of 223. Tell me, is this the answer? This temperature. And in case of degree Celsius, you have to take minus 273. You will get in degree Celsius. 5, 6, 9, 2, this degree Celsius. Tell me, is this the option given? Pata, do you have this option? Yes. Tell me. Tell me, everyone. Chandana, what is really important? Formula or more than formula key? We can mistake here. Increase by 3 times or 3 times of RMS. Formula is not important, so we have to understand first. Yes. I'm not saying कि formula is not important. Formula is, but you will do maximum mistake in understanding the question. कि तुम Yes, sir. क्वेश्चन को समझने में ही मिस्टेक करोगे. Why you will do that mistake? क्योंकि तुम्हें लगेगा कि ये 3 टाइम है. And let me tell you, क्योंकि today I have solved this question. तो अभी ये मैंने intentionally किया. Even I did mistake when I was going through it. मैंने भी मिस्टेक की थी जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, लेकिन मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ. That's why I'm able to do this. But you are doing it maybe first time. You can make mistakes. So every time you have to understand there is a difference between end time and increase by end time. Okay. If they give end time, then you will take no, not 3 and end time. If these two situations are given, end time means come end time of the initial velocity. Here, whatever was the velocity, you increase end time more. That is the difference. मुझे बताओ कि क्या यही मिस्टेक करते थे तुम अब तक फिजिक्स में, इन छोटी छोटी चीजों को समझने में? Were you doing the same mistake to understand the small thing like that? यस सर. सर Yes. एनएचएम के भी एक क्वेश्चन में ऐसा ही गलती हुआ था. And like
I've been telling this from last 2 years कि बस यही तुम मिस्टेक करके आते हो. This is the mistake you are doing every time in physics. You are not poor in physics. You are not able to understand how you are doing silly mistake. तुम्हें बस यही समझ में नहीं आ रहा ये छोटी छोटी मिस्टेक हो कैसे रही है. And if you are doing silly mistake or you are not able to interpret the question, इसका मतलब ये है तुमने enough number of questions solve ही नहीं की. इसलिए like you did not solve enough number of question and that's why कि मैं most of time फाइनल आंसर बताता भी नहीं, बस मैं ये बताता हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना और तुम कहाँ पे मिस्टेक कर सकते थे. Like how you have to solve question and how you could make mistake and how you can avoid that mistake. This is the key thing. What is the difference between end time and increase by end time? Got it? Yes or no? Fifteenth question. Three vessels of equal capacity, this word is important, have gases at same temperature, same pressure, same temperature, same pressure, same capacity. So volume is also same. First vessel have helium, second vessel have fluorine, and third vessel have sulfur dihexafluoride. Which statement is correct? Same temperature, same pressure, same volume. So what is changing in this case? What is changing in this case? Helium, fluorine, and sulfur hexafluoride. What is changing? Molecular weight. Molar mass is changing, Yes. right? And according to the molar mass, we already did this part. Key, it is inversely proportional to the molar mass, correct? Because why? Let me write those equation again. You know when you calculate, next question, when you calculate VRMS, so this is equal to under root 3 P by rho, correct? Or 3 RT by molar mass or 3 kBT by M, right? These were the three form, correct? Yes or no? So it does not depend upon the pressure because pressure is constant. Sorry, pressure is constant. Does not depend upon the density because volume is constant, so density constant. Does not depend upon the temperature because temperature is also constant. These three value is given in the question. कि pressure, temperature, and volume is constant. Okay. So what does it depend upon when gases are changing? VRMS depend inversely upon the molar mass. If molar mass increase, VRMS will decrease. The gas have minimum molar mass, will have maximum velocity. And logically this is correct. सोचो खुद कि जो सबसे हल्की गैस होगी वो फास्ट मूव करेगी ना, और जो सबसे भारी होगी तो वो बहुत स्लो मूव करेगी क्योंकि हैवी बहुत. If you have a lighter gas, light particle move fast. If you have heavy gas, heavy particle move very slow. Logically, this is correct. Less mass, more speed. Now, all of you tell me this answer. What is the helium mass? 2. What is the 2? What is the fluorine mass? I guess 19. What is hexafluoride? Too much. We are not bothered about, but too much, like 32 plus 6 into 19, too much. Now tell me, all of you have to tell me what is your answer.
Barinder. Option D. Option D. Anvita. हाँ sir, D. Answer. Yeah, D. Sandana. D, sir. Sania. So D. Pratigya. Pratigya. क्लास में नहीं है सर. Okay. So now tell me all of you. बताओ मुझे कि क्या ये बहुत मुश्किल सवाल था? No. Was it really difficult? No, sir. See, physics is not tough. Our approach toward physics is tough. And that is what I've been mentioning, especially from this year, even from the last year. कि I am not the greatest physics teacher or chemistry teacher or biology teacher. कि मैं सबसे महान टीचर नहीं हूँ. बट मैं ये जानता हूं कि तुम्हें नीट कैसे क्रैक करवाना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए. आई नो हाउ यू कैन क्रैक नीट और लाइक व्हाट शुड बी द अप्रोच. समझ गए? सी इवन हियर at what temperature of RMS speed of oxygen molecule just sufficient to escape from the earth. This question we will do in the next class because I will mention the escape velocity. Here again, you are calculating same thing. The molecule of a given mass, so molar mass is fixed, have RMS speed this at this temperature and this pressure. When the temperature and pressure is changing, what should be the RMS molecule? Now write VRMS speed again, 3P by rho, 3 RT by molar mass or 3 kBt by M. Most of time you will use first two situation, most of time, but we will always write 3. So given mass, so molar mass is same because you have same gas. Temperature is changing and pressure is changing. It's your choice whether you want to take temperature or you want to take pressure. If you want to take temperature, just take temperature, forgive pressure. So क्या होगा? V2 by V1 because it directly depend upon the under root of the temperature, right? Under root of temperature. So it will become T2 by T1. What is T2 value? 127. It means 400 degree, 400 Kelvin. 27, 300 Kelvin. Correct? Now you can calculate 2 by root 3 multiply by what is V1 value 200. Tell me. बहुत मुश्किल सवाल था ये. Was it really difficult? Was it really difficult? What you are supposed to do. That's why I'm not expecting you to solve question. Understand the question. Given mass, so molar mass is fixed. Have RMS speed, given value, given temperature, given pressure. Okay. What should be the if next temperature is this, next pressure is this, what should be the RMS value? Now it's your choice. You want to take this criteria of pressure, still you will get same answer, or criteria of temperature, still you will get same answer. It's your choice. Understood? Because even VRMS directly depend upon the under root P. Same way. Got it? But temperature part is easy because MW is constant.
That's all for today, guys. Tell me, how was this session? Was it difficult, easy, medium? You enjoy the session? Were you supposed to remember formulas? Sir, it was good. Nice one, sir. Okay. Helpful. Yeah. Sir, I had a doubt in the question. Which one? This one? No, sir. 17. The one I sent in the group, sir. Yeah, I've seen this question. मैंने देखा था. तो क्या बोलते हैं, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जब ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे ना, तो हमारे लिए इजी होगा ये ट्रांसलेशन के लिए, क्या बोलते हैं, निकालना. Though we did this part, I guess, let me check if we did. If we did, we'll definitely do. Volume is given total. Yes, Anvita. हाँ, अगर ज्वाइन कर सकते हो तो कर लो. शायद एक क्वेश्चन मैं चेक कर रहा हूँ कि वो कर सकते हैं, वरना क्लास तो खत्म होगी. बस एक सानिया का क्वेश्चन है तो वो सॉल्व करना. ओके. सो सानिया, pressure of the hydrogen. We have volume, total average kinetic energy for this pressure. Yeah, see this formula. This formula, or you can say this formula. तो मैंने फॉर्मूला डाल के किया था, लेकिन आंसर गलत आ रहा है. चेक कर लेते हैं. Let's check this. According to your question, we have to calculate pressure. So this translation energy is equal to 3 by 2 PV, right? 3 by 2 PV. Guys, I'm solving question. What's this and in the group? Mm, translation energy is equal to 3 by 2 PV. We have to calculate pressure. Pressure will be equal to 2 by 3 translation energy by volume. 2 by 3. What is the energy given? 1.5 into 10 raised to power 5 joule. And volume 20 liter. Now you have to convert 20 liter into meter cube. So what will be the value, Sania? Sir, it will be, so 1 by 2 into 10 to the power minus 4. You will divide by 1000, right? You will divide by 1000. 20 you will divide by 1000. Then you can calculate. Tell me, you got the same answer. If you remove this 1 point, it will become 5. 5 to the 10, 10 cancel. 10 cancel. It will be 50 10 raised to power 5 or 5 into raised to power 6. बताओ. You got this answer. This is the answer Yes, given. sir. Yes, sir. No, sir. Sir, ऑप्शन में आंसर नहीं है. 2 और 4 into 10 to the, मतलब ऑप्शंस में सिर्फ 2 into 10 to the power 6 के फॉर्मेट में, या तो 4 into 10 to the power 6 के फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है. Average kinetic energy of the translation motion of its molecule is this. Here we made mistake. No, I don't think so. There is any mistake. Let me know if there is. बताओ. This is the same thing.
but I'll check once again your question. सर वो जो 1000 वाला वो कहाँ से मतलब आया? Because you are converting 20 liter into meter cube. Okay, sir. Hmm. नहीं, आंसर तो यही आएगा. You will get the same answer. Yes sir, I got the same answer. लेकिन सर ऑप्शन से मैच नहीं हुआ तो मुझे लगा गलत आया. नहीं, this is correct. Sometimes there could be wrong answer because I have checked on the other part also. See, कि when I check this key to make sure कि on Google, this share on Google image to where is Google? Google. January. हाँ. So 1 liter is equal to 10 to the power minus 3 meter cube. Energy is equal to 3 by 2 PV. So you can calculate pressure. What will be the value? Tell me. So even if it is saying कि one option will to be 4. And just imagine कि third and fourth option same दिया है. Isn't it? Yes sir. So how is that possible? So there is a typing mistake. Okay sir. Okay. Yes sir. हाँ. So I thought कि we didn't do this topic, but हाँ, so तुमने अच्छा याद दिलाया. It is there. तो बताओ. Now because सर एक और we क्वेश्चन में डाउट है थोड़ा. हाँ सेंड करो. हमने कर लिया वो टॉपिक. Are we done with the topic? Yes sir. Okay, sure. Send in the group. Yes sir. So, Yes, Anvita. sir, I did neural control and coordination, and I'm doing respiration and plants. So, can you give me a test tomorrow? From respiration plant or neural Respiration and plant and neural control and coordination. tomorrow. Okay, sure. So we spent almost 2 hours. Tell me, was it like really boring